Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. This is your course Principles of Animal Life 2 and I am your instructor Dr. Imrana Amir. Today the topic for our lecture is learning and habituation. Learning. What is learning? A change in an organism's behavior or thought as a result of experience in a given environment. Learning produces changes or modifications in the behavior of an individual that are based on the experience of that organism or animal. So learning is adaptive, learning is flexible, and learning can always be modified because it allows an animal to respond quickly to the changes in its given environment. So once an animal learns something, its behavioral choices increases. एक animal के पास जब एक learning आ गई एक specific environment की, उसके बाद उसकी behavioral choices diverse हो जाती हैं, huge हो जाती हैं because it knew how to respond to that specific stimulus. An animal's ability to learn may correlate with the predictability of certain characteristics of its environment. एक organism की learning ability depend करती है कि उसके environment के अंदर के characteristics कितने predictable हैं. जहाँ पे certain changes उसकी habitat की regularly हो रही होती हैं और वो predictable हैं, तो animal उस हैबिटेट या उस इन्वायरमेंट के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए लर्निंग से ज़्यादा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के ऊपर रिलाई करता है और उसका इंस्टिंक्टिव या इनबॉर्न या बिल्ट इन रिस्पॉन्स जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है एज़ कम्पेयर टू द लर्नड बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू एन एनिमल दैट वुड नॉट नेसेसरली बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग इन दिस सिचुएशन. उसकी वजह यह है कि वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए अपनी इंस्टिंक्ट लेकर पैदा होता है. उसके अंदर अपने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर उस स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए पहले से मौजूद होते हैं और वो प्रिडिक्टेबल हैं, यानी पहले से पता है कि उस इन्वायरमेंट में वो स्टिमुलस मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्स देना है. हाउएवर वेयर सर्टेन इन्वायरमेंटल चेंजेस आर अनप्रिडिक्टेबल, जो चेंजेस अनप्रिडिक्टेबल हैं जिनको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बिफोर टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दे आर सडन, दे आर नॉट फ्रीक्वेंट. In that given situation, an animal modify its behavioral responses through learning or experience. जहाँ unpredictable होगा, जहाँ पे anticipate नहीं कर सकते एक stimulus को, एक change को, वहाँ पे एक organism अपनी learning या experience की base पे ये सीखता है कि last time ये stimulus आया था तो इसको मैंने इग्नोर किया था या इसको मैंने रिस्पॉन्ड किया था और इसका क्या रिज़ल्ट हुआ था. सो इस केस में लर्निंग इन्वॉल्व होगी एज़ कम्पेयर टू दैट सिचुएशन के जिसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक स्टिमुलस ने अपीयर होना है, एक ऑर्गेनिज्म ने अपना बिल्ट इन रिस्पॉन्स शो करना है. और ये मॉडिफिकेशन बिहेवियर की एडेप्टिव है. क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म ने एक ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं रहना बट they would move. Animals move from one place to another, so their environment definitely is going to change. So this adaptive behavior allows an animal to not only change its response to fit a given situation but also to improve its response to the subsequent similar environmental changes. कोई changes या stimulus एक environment में irrelevant हो सकता है, but same stimulus in another type of environment it could be harmful to that organism. So these adaptive changes enable an organism to fit to a specific given condition. Several different categories of learning have been identified ranging from habituation, जो कि simplest form है, which we are going to study in the next slides, to the insight learning, which is the most complex form that involves the cognitive process or the critical thinking of an organism. So as far as the types of learning are concerned, there are different types of learning and many behavioral scientists and different other researchers have categorized the behavior into different types. However, there one type of learning is imprinting, as we previously discussed. There is a huge debate on the type of imprinting, whether it is a kind of inbuilt or instinctive behavior or a learned behavior.
So we are not going to discuss the imprinting as a type of learned behavior, as it is debatable issue. Some people say that imprinting is inbuilt characteristic. However, some other scientists are of the view कि imprinting एक organism या animal की inborn characteristics होती है, लेकिन एक animal जो imprinting या copy करना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सीखता है, वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करता है जो भी उसके इन्वायरमेंट में चीज़ें मौजूद होती हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल कि इम्प्रिंटिंग जो है वो लर्न बिहेवियर की टाइप है या इंस्टिंक्ट की है. वी विल ब्रॉडली डिस्कस इट the imprinting as a main type of inbuilt behavior, and we are not going to categorize the imprinting as a type of learned behavior. So we are only going through the main types of learned behavior which are widely accepted. So there are 6 categories or 6 types of learned behavior which are categorized over for different or all the animals, which are: number 1, habituation; number 2, sensory adaptation or sensitization; number 3, classical conditioning; number 4, operant conditioning; number 5, observational learning; number 6, insight learning. So these are all the main types of learned behavior. We will discuss these all types of learned behavior in the next slides and in next few lectures. Habituation is the simplest form of learning. Simply, we can define it as the habituation as the loss of response to any stimulus or change in the surrounding or in environment. Habituation is the simplest and perhaps the most common type of behavior in many different animals and organisms. We can define it as the process of responding less strongly over time in response to repeated or continuous stimuli. दैट मीन्स कि इसमें एक रिपीटेड स्टिमुलस का एक्सपोजर इन्वॉल्व है, इसमें एक्सपीरियंस और टाइम इन्वॉल्व है, और फिर उसका रिस्पॉन्स इन्वॉल्व है कि वो एनिमल किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है. एन एनिमल लर्न्स टू इग्नोर द स्टिमुलस इन इट्स इन्वायरमेंट दैट आर कंटिन्यूस एंड इररेलेवेंट. एक ऑर्गेनिज्म अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये लर्न कर लेता है कि जो स्टिमुलस उसको रिसीव हो रहा है अपने इन्वायरमेंट से वो कंटिन्यूस है, बट वो उसके लिए इररेलेवेंट है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू दैट ऑर्गेनिज्म. बाय हैबिचुएटिंग टू अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलस, व्हाट डज एन एनिमल गेन और गेट्स? An animal conserves its energy and time that are better spent on other important functions. So if the stimulus is withdrawn, अगर वो stimulus withdraw हो जाएगा, उस environment से for the time being ख़त्म हो जाएगा, तो उस ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स जो है वो रैपिडली वापस आ जाएगा. दैट मीन्स कि वो विड्रॉ कर लिया जाता है और कुछ टाइम के बाद सेम स्टिमुलस दोबारा रिपीट होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म उतना ही क्विकली उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा. दैट मीन्स कि इसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ उस तरह से इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं है. हैबिचुएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी कंडीशनिंग. इसमें प्रीवियस कंडीशनिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सिर्फ रिपीटेड एक्सपोजर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. An example of habituation can be seen in the response of crows to the presence of a scarecrow. Initially, birds क्या करते हैं? They quickly respond to the scarecrow in present in the field or in any environment. So they consider it as a valid threat and they fly away. वो फ़ौरन से उड़ जाते हैं. But eventually and slowly क्या होता है? Repeatedly, same scarecrow present होगा जब, the birds will react less and they will not fly away, demonstrating the habituation. The next example is the squirrels. You can easily observe the squirrels which are present in the city park or in any college or university or any educational institute, as they are not threatened by the pedestrians or human beings which are present or moving in their environment. So because they have adjusted to the movement of the humans and automobiles. So habituation is believed to be controlled through the central nervous system of an organism, and it should be distinguished from the sensory adaptation. Sensory adaptation में क्या होता है जी? Sensory adaptation involves repeated stimulation of the receptors until they stop responding. इसमें आपके receptors की repeated stimulation होती है और आपके receptors respond करना बंद कर देते हैं. जबकि habituation में stimulus आपको repeatedly आ रहा होता है, वो स्टिमुलस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेस होता है और एक ऑर्गेनिज्म स्लोली विद एक्सपीरियंस ये लर्न कर लेता है कि ये स्टिमुलस जो है ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करना है,
और इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, और एक ऑर्गेनिज्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग के बाद उस स्टिमुलस को इग्नोर करना सीख लेता है। इन सेंसरी एडेप्टेशन आपके रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं रिपीटेड स्टिमुलस को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एंटर अ रूम विद एन अनयूजुअल ऑर्डर, योर olfactory sense organs soon stop responding to these orders. Same happened to when you enter in a dark room and your eyes could not distinguish anything in the dark, but slowly your eyes are receptors are adjusted to that. Sensory adaptation is the second type of learned behavior. Sensory adaptation, as the name suggests, इसमें adapt कर लेता है किसी भी organism के sensory receptors. और sensory adaptation involve the repeated stimulation of the sensory receptors until they stop responding. इसमें regular अनचेंज स्टिमुलस आपके सेंसरी रिसेप्टर्स के पास रिसीव हो रहा होता है, बट आपकी सेंसेस उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेंसेस। सो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड दीज न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन और न्यूरल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होती हैं? दीज आर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टेस्ट बड्स। दीज ऑल सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स, और वो डिपेंड करती है उनका स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कि वो ऑर्गेनिज्म या एनिमल हायरार्की में किस जगह एग्जिस्ट करता है। लोअर कॉर्डेट्स में ये टेस्ट बड्स या ये सेंस ऑर्गन्स इतने स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे या प्रेजेंट होंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, बट हायर कॉर्डेट्स में ये सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें सेंसरी अडेप्टेशन की, तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर सेंसरी अडेप्टेशन। इफ़ यू एंटर अ डार्क रूम विद एन अनयूजुअल ऑर्डर, अगर आप किसी ऐसे रूम में जाएं जहाँ पे डार्कनेस है या अनयूजुअल ऑर्डर है या स्मेल है, तो सडनली आपको वो ऑर्डर वाली जगह पे या स्मेल वाली जगह पे वो पंजेंट स्मेल या ऑर्डर बहुत ज़्यादा फील होती है। डार्कनेस सिमिलरली बहुत ज़्यादा अंधेरे में आपको कुछ नज़र नहीं आता, बट सून आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम एक्सपीरियंस, आपकी आई रिसेप्टर्स उस अंधेरे के लिए, डार्कनेस के लिए यूज टू हो जाते हैं, एंड यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग समथिंग इन दैट सेम डार्कनेस और सेम स्टिमुलस। इसी तरह से वो ऑर्डर या वो स्मेल जो आपको थोड़ी देर पहले तक बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही होती है, थोड़ी देर के बाद आपके olfactory सेंस ऑर्गन्स या आपके नोज़ के रिसेप्टर्स उस स्पेसिफिक स्मेल या ऑर्डर के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं और आपको वो ऑर्डर या स्मेल बॉदर नहीं होती। Habituation and sensory adaptation, these are the types of learned behavior. Although these are both the type of learned behavior, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल की एक्सपीरियंस या लर्निंग के टाइप्स हैं। However, there are basic differences between these two learning behaviors और learning patterns. Habituation में मेन रोल ब्रेन का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, जबकि सेंसरी अडेप्टेशन में मेन रोल सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन्स का है। सो दीज आर टोटली डिफरेंट लर्न बिहेवियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिचुएशन, जिस तरह से हमने पहले इसको डिस्क्राइब किया है, हैबिचुएशन इज़ द टेंडेंसी ऑफ द ब्रेन टू स्टॉप अटेंडिंग टू द कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ब्रेन के पास एक कॉन्टिन्यूस रेगुलर स्टिमुलस आ रहा है और ब्रेन या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करना, रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है या फिर उसको स्लो कर देता है उस प्रोसेस को। और हैबिचुएशन की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनर्जी कंजर्व होती है और वो अपनी अटेंशन, अपने रिसोर्सेज और डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ अपनी अटेंशन लगा सकता है और अपने बिहेवियर पैटर्न्स डिफ़ाइन कर सकता है। हैबिचुएशन की बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हाउएवर these are very prominent in case of higher animals and human beings as well. So examples हम यहाँ पे जो कोट कर रहे हैं वो बेसिक दो एग्जांपल्स हैं, जिसमें लिविंग या एयरपोर्ट्स है। अगर आप एयरपोर्ट के करीब रहते हैं तो यू आर नॉट बॉदर्ड बाय द नॉइज़ विच इज़ क्रिएटेड बाय द एरोप्लेन्स ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जबकि कोई नया बंदा आपके घर पे या आपकी उस प्रेमिसेस में आता है तो दैट नॉइज़ इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हिम। लाइक जब एरोप्लेन्स टेक ऑफ या लैंड करते हैं तो वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा हार्श होती है और वो ईयर्स के लिए टॉलरेट करना बहुत टफ़ होता है। उसकी वजह यह है कि उस ऑर्गेनिज़म के पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता उस स्पेसिफ़िक साउंड के लिए, उस स्पेसिफ़िक नॉइज़ के लिए, जबकि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं वो उस नॉइज़ के लिए हैबिचुएट कर चुके होते हैं ऑलरेडी और उनकी सेंसेस या उनके ब्रेन्स
उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, या वो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट स्टिमुलस नहीं रहता। सिमिलर इज़ द केस फॉर एयर कंडीशनिंग। अगर आप एयर कंडीशनिंग के इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को हैबिचुएट कर लेता है, तो वो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू लिव विदाउट एयर कंडीशन के। विदाउट एयर कंडीशन जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर बहुत हायर होगा, आपके पास एयर कंडीशन अवेलेबल नहीं है या वो काम नहीं कर रहा, तो उस ह्यूमन बीइंग के लिए उस इन्वायरमेंट को टॉलरेट करना बहुत टफ हो जाता है। ऑल्दो ही और शी इज़ टॉलरेटिंग इज़ डेफिनेटली, वो सर्वाइव तो कर रहे होते हैं, बट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि एयर कंडीशन के लिए हैबिचुएट नहीं होता और वो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस को ईजिली टॉलरेट कर लेता है। देन कम्स द सेकेंड टाइप विच इज़ द सेंसरी अडेप्टेशन। लर्न बिहेवियर की जो टाइप है जिसमें आपके सेंसरी रिसेप्टर्स एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए जो कि उनके लिए इररेलेवेंट होता है। सो सेंसरी अडेप्टेशन इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स टू बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टू अ स्टिमुलस दैट इज़ अनचेंजिंग। इसमें भी एक अनइम्पॉर्टेंट या इररेलेवेंट स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देता है कोई ऑर्गेनिज्म या उसके लिए अडेप्ट कर लेता है, बट इसमें मेन रोल सेंसरी रिसेप्टर्स का है, सेंस ऑर्गन्स का है, जिसमें आपकी सेंसेस उस स्टिमुलस को जो कि सेम फ्रीक्वेंसी से सेम पैटर्न पे आ रहा है लेकिन हमारे रिसेप्टर्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो सेंसरी अडेप्टेशन में भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनर्जी कंजर्व हो जाती है, वो इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस को ज़्यादा तवज्जो से, ज़्यादा अटेंशन से उसको इवेलुएट कर सकता है। फिर इसकी एग्जांपल्स जो हैं बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स में इसकी एग्जांपल्स को इसलिए डिस्कस कर लें बिकॉज दैट इज़ ईजी टू रिलेट विद दोज एग्जांपल्स। लाइक हॉट शावर का केस है। अगर आप हॉट शावर में एकदम गर्म पानी से बाथ लेते हैं या आप अडेप्टेड हैं हॉट शावर के लिए, तो यू वुड नॉट बी एबल टू टॉलरेट द कोल्ड वाटर। सिमिलर इज़ द केस कि जब आप गर्म पानी को पहले टच करते हैं तो दैट सीम्स टू बी टू हॉट टू टच, लेकिन स्लोली आप अगर उसको टच करेंगे थोड़े देर बाद तो वही हॉट वाटर, ऑल्दो उसका टेम्परेचर तो इतना ड्रॉप नहीं किया होगा लेकिन आपको वो इतना हॉट फील नहीं होता। लाउडर म्यूज़िक का केस है। अगर आपकी सेंसेस, आपके ईयर्स अडेप्टेड हैं लाउड म्यूज़िक के लिए, अगर आपको वो पसंद है तो यू वुड बी अडेप्टेड टू दैट म्यूज़िक। इसी तरह से पॉप सिंगर्स जो कि लाउडर म्यूज़िक में रहते हैं, लाउडर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाते हैं, उनकी सेंसेस अडेप्ट कर चुकी होती हैं उस लाउडर म्यूज़िक या नॉइजी म्यूज़िक के लिए, जबकि बाकियों के लिए इसको टॉलरेट करना मुश्किल होता है। सिमिलर इज़ द केस फॉर टर्न ऑफ द लाइट्स। कई लोगों को लाइट ऑफ करके नींद आती है, उनका स्लीप पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाइट ऑन करके नींद आती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेंसरी अडेप्टेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। सिमिलर इज़ द केस फॉर स्मेल्स इन समवन्स हाउस। आप किसी अननोन घर में जाते हैं तो उसकी स्मेल, पंजेंट स्मेल या ऑर्डर आपको बहुत ज़्यादा फील होती है क्योंकि आपके नोज़ रिसेप्टर्स के पास उसकी प्रीवियस लर्निंग नहीं होती, लेकिन जो लोग उस घर में रहते हैं वो उस स्मेल या उस ऑर्डर, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट वट एवर द केस, वो उसके लिए अडेप्टेड होते हैं। उनकी सेंसेस या उनके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो उनकी नोज़ में मौजूद है। इन अदर एग्जांपल इज़ द केस ऑफ स्मोकर्स के सिगरेट की स्मेल, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको वो सिगरेट की स्मोक या स्मेल इतनी बॉदर नहीं करती, बल्कि दे आर यूज्ड टू ऑफ दैट, देयर सेंसेस आर अडेप्टेड टू दैट स्मेल। जबकि कोई दूसरा बंदा जो उस स्मोकर के पास बैठेगा उसके लिए वो टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट हैबिचुएशन एंड सेंसरी अडेप्टेशन। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एनिमेशन देखेंगे हैबिचुएशन की और सेंसरी रिसेप्टर्स की, जिसमें आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी कि सेंसरी रिसेप्टर्स किस तरह से काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। The brain constantly receives vast amounts of sensory input. For your brain to detect critical information and react appropriately, non-threatening or unimportant information is suppressed. An important sensory suppression mechanism is called habituation. Habituation is another way to say getting used to a sensory input. You learn to tune out or ignore a stimulus that you're repeatedly exposed to. There are many stimuli that we experience every day, including sounds, images, and smells that we gradually learn to ignore. Habituation is most successful when repetitive sounds are perceived as non-threatening or unimportant. For example, if you move into a new home next to a train station, initially
you are very aware of the trains coming and going. The constant sound of the trains may seem loud or disruptive. With repeated exposure to the train sounds, you will reach a point where you are no longer aware of this noise. Surely you know the 5 senses: sight, smell, taste, sound, and touch. But do you know how they actually work? How do these sense organs pick up information from the surroundings and transmit it to our brains? All of the senses have something in common: sensory receptors. Sensory receptors detect changes in the environment. We'll look at 4 of the specialized receptor cell types: mechanoreceptors, chemoreceptors, thermoreceptors, and photoreceptors. Mechanoreceptors respond to forces and movements. Chemoreceptors respond to chemical substances. Thermoreceptors respond to heat, and photoreceptors respond to light. Now let's see where these sensory receptors are put to work in our senses. Olfaction is our sense of smell. The olfactory bulbs of the brain are located on the other side of the skull bone from the nasal passage. When molecules enter our nasal passage, let's say a molecule of vanilla, the vanilla molecule will bind to an olfactory receptor in the nasal epithelium. The olfactory receptor is a type of chemoreceptor because it's activated by specific chemicals or groups of chemicals. The vanilla olfactory receptor is specific to just the vanilla molecule. Once activated, the olfactory receptor sends a signal through neurons to the olfactory bulb in the brain, and then it's sent to be processed in the olfactory cortex. Humans have about 400 different odorant receptors, which allows us to identify around 1 trillion different odors. But other animals like mice have 1,000 different receptors, and by comparison, humans don't have a very sensitive sense of smell. Aquatic animals can also smell dissolved chemicals in water, just as we smell dissolved chemicals in the air. Gustation is our sense of taste. Within the taste buds on our tongues are many gustatory receptor cells with hairs that will bind to the molecules in food and send messages to our brains. Gustatory receptors, like olfactory receptors, are another type of chemoreceptor. Our sense of sight uses rods and cones as the main sensory receptor cells. Rods and cones are located in the retina of the eye, and they're types of photoreceptors. The rods allow you to see in dim light, and the cones detect color and bright light. Our sense of hearing uses complicated structures in the ear. Beyond an almost Rube Goldberg maze of membranes and tiny bones is a snail-like region called the cochlea. Deep in the cochlea are tiny hair cells, which are mechanoreceptors that register movement that's amplified from sound waves that enter the ear. Mechanoreceptors in the semicircular canals are also used to help with our sense of balance. In the skin are many types of receptors, including Merkel cells, which are mechanoreceptors that detect touch, and thermoreceptors, which can sense hot and cold. Thank you so much. That's all for today's lecture.